Learn the art of investing on Moneywise. Welcome back, everyone, to the Moneywise Podcast. Brought to you by Bandhan Mutual Fund. I'm Ahalya, a new voice is podcast par. And I'm very excited because, Moneywise, the name is very self-explanatory, hai na? We all hope to be wise with our money. But one of the timeless questions that keeps coming up is, can money actually buy happiness? And I think that is a perfect representation of our podcast also, because it is about money and it is also about wisdom. I don't have too much of that wisdom, which is why we need our guest today. I'm talking about Vinayak Sapre, who is a financial coach, author, blogger, and public speaker who is on a mission to spread financial literacy to 10 million Indians all over the country. He's also authored 2 books called Dohanomics and very interesting takes and perspectives in kitabon mein, where he actually quotes, Sant Kabir and Rahim. So let's get this conversation started. Vinayak, welcome to Moneywise. Thank you so much आज हमारे साथ टाइम बिताने के लिए. बहुत बहुत शुक्रिया अहल्या, मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया आपने. थैंक्स अ लॉट. I think my first question to you, Vinayak, is we always think about पैसे के साथ क्या करें, right? शायद when we were kids, we used to get cash gifts, है ना? And our elders would always tell us, बेटा अच्छे से spend करो. And we'd always think, what does this अच्छे से mean? When I was younger, I would spend it on the first thing that I could think of. But the older I grow, the more I think, अच्छा, so this 5,000 rupees is an SIP for me. It's not a meal. So I think about, okay, money can buy happiness when I spend it on a goal I actually care about. But what about investing, and pandemic ke baad, have you noticed that investors continue to actually allocate their savings to a productive use? Or do you think it has dropped kyunki beech mein we couldn't spend it on much, to abhi bas we want to spend it on a lot? Ahalya, in fact, I agree that money can buy happiness if it is mapped to a goal. ओके एंड बड़े लोग आपसे जब कहते थे कि अच्छे से इस्तेमाल करो या अच्छे से खर्च करो, इट मीन्स दैट इसका मीनिंगफुली आप खर्च करो इस पैसे को. हाँ, इसकी स्पेंडिंग ढंग से होनी चाहिए. बेसिकली अगर आप इन्वेस्टमेंट की भी देखो, so why do we invest? We invest usually to spend it later on ourselves or for the next generation. But eventually उसका निष्कर्ष यही होता है कि it is meant to be spent. How that is important, that's the reason you need a goal. Now coming to your next question is, pandemic के बाद investment में या investing habits लोगों की बदली है या लोगों ने investment करना ज्यादा शुरू किया है? Answer to that question is yes. That's the reason we have more than 10 crores Demat account which got opened during and later on in the pandemic, in the later years also. Having said that, at the same time, what has happened in the last 1.5-2 years, especially since 2021 when it got opened up, a recent data of RBI suggests कि historically इंडिया में इतना ज्यादा पर्सनल लोन लोगों ने लेना कभी नहीं शुरू किया था. तो आज की डेट में जो पूरी लोन बुक है उसमें सबसे बड़ी लोन बुक बैंक्स की पर्सनल लोन पे है. What does that mean? It means that people are probably spending more than they earn as well. So because of the sheer size of the country, you will always find 2 different data. At one side, you have 10 crore new investors coming in and opening the Demat account. At the same time, you have huge number of people who are taking personal loan. So both the things have happened. But it's also good to know कि ठीक है, you can actually be happy with the money that you have. And that brings me to the next thing, Vinayak. We all want to be rich, है ना? I don't think there's a single person, अगर choice दिया जाए, वो कहेंगे हाँ, अगर if I can be rich, I would like to be rich. ये तो अलग बात है कि बहुत काम करना पड़ता है. We have to, play the game intelligently, as they say. And that, leads us to thinking, if someone else could do it, then how can I get there? And what are some of the common habits of these people when you think about financial habits? अच्छा, अगर आप ये देखो that if you take out the list of world's richest 100 people, तो आप पाओगे कि you will not find a single trader in that, most likely. You will not find a real estate guy. आप वो देखोगे जो equity owners हैं या long term investors हैं, equity investors हैं. So these are the guys who are owners of equity.
That's the reason they have reached to that level. Obviously, they must have taken a lot of risk, and that one needs to understand that better. But for a retail investor, for people who cannot take that kind of risk or who don't have that much of resources, who don't have a research team in place, or who don't have that much of capital to start their business, what they can do is basically they can choose a investment vehicle called mutual fund, which caters to almost all the needs across all risk categories at the same time the investment horizons. तो आपको 3 दिन से लेके 30 साल तक की भी, अगर 30-35 साल तक की भी रिक्वायरमेंट है, वो सारी आपको ये स्पेक्ट्रम में मिल जाती है. And mutual funds offer you that solution for short term, medium term और long term जो आप potential wealth create करने की बात कर रहे हो. तो the habits one need to do. तो vehicle आपको पता चल गया, अभी habit क्या चाहिए. Habit ये चाहिए that you need to start early. And successful लोगों की एक खास बात होती है that it is 5% brain, 95% consistency. So you need to start early investing and at the same time कंसिस्टेंटली उसको इन्वेस्ट करते रहना जरूरी है. तभी आपको जो आपकी सफलता, आप जो बोल रहे हो कि आपको लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करना है, वो मिल सकता है. तो कबीर साहब का एक दोहा है यहाँ पर, जब वो कहते हैं कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए. तो यू नीड टू हैव पेशेंस. इंग्रेडिएंट ऑफ क्रिएटिंग वेल्थ, serious wealth is you need to have patience, discipline, that is consistency, and आपको कंपाउंडिंग का तभी आपको फायदा मिल सकता है. हाँ, ये तो आपने बहुत ही सही बात कही है विनायक. You're listening to Moneywise, successful investment ideas that create wealth. Did you know? As per RBI data, Indian families have shown a 2.5x jump in mutual fund investments in FY22 in comparison to financial year 2020-21. Over 10 million new investors started an SIP and invested a total of 1.2 lakh crore rupees in FY22. Personal finance simplified only on Moneywise. But then, that also brings us to that risk aspect that you were talking about, Vinayak, कि अगर हमें बहुत पैसे बनाने हैं और जल्दी करना है, ये पॉसिबल है या नहीं? It is very difficult to do both in legitimate way. हाँ. Okay. रातों रात पैसा बनना मुश्किल है, तो इसलिए मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, पैसा या तो जल्दी बनेगा या ज्यादा जल्दी बनेगा, इसके चांसेस बहुत कम है. आपको छोटा सा एग्जांपल मैं दे देता हूँ. इन रिसेंट सर्वे बाय सेबी, इन्होंने अपनी रिपोर्ट में एक बात कही है कि 10 में से 9 लोग फ्यूचर एंड ऑप्शंस में पैसे गंवाए हैं. उन्होंने जीरोदा के वहां पर उसके सीईओ ने एक अपने ब्लॉग में एक बात लिखी कि पिछले 3 सालों में 3% ऑफ द पीपल, ओनली 3% ऑफ द पीपल हु वर ट्रेडिंग ऑन F&O वर एबल टू बीट बैंक FD रेट. तो इतनी माथापच्ची करने के बाद भी 3% लोग सक्सेसफुल हुए हैं, वो भी बैंक के FD को बीट करने में. और आपको एक मजेदार चीज बताऊं कि जब वो जल्दी पैसा बनाने के चक्कर में जो लोग होते हैं, तो एक डेटा बताता है कि 1.4 करोड़ में से एक इंसान को जैकपॉट लगता है. ओके, लेकिन फिर भी सारी दुनिया जल्दी पैसा बनाने के चक्कर में लगी होती है. एंड इफ दैट इज नॉट एनफ, जिनको जैकपॉट लगता है उसमें से 70% से अधिक लोग अगले कुछ सालों में बैंकक्रप्ट हो जाते हैं. And I think another interesting outcome of this approach, Vinayak, है कि we shouldn't also make those exceptions our rules. When we read a newspaper and we read about people who have hit the jackpot, like you said, we tend to think अगर उन्होंने कर लिया तो we can do it. What is the big deal? But it is a factor of so many things, right? Luck and being at the right place at the right time. I mean, there are so many things which, most of the things which are not in your control. So rather you should focus on the things which are in your control. Okay? And जब आप जल्दी पैसा बनाने के चक्कर वाले में चीजों में आते हैं, तो आप एक बात को भूल जाते हैं कि इन सब जगहों पे मनी doesn't get generated, it gets transferred. तो वो जो 1,39,83,816 लोगों में से एक को जब जैकपॉट लगता है ना,
तो 1,39,83,000 लोग से ज्यादा ऐसे लोग होते हैं जो पैसे गंवा चुके होते हैं, तब जाके वो Absolutely. 816वें आदमी का जैकपॉट लगता है। That is a very important thing, that point that you have just brought up. और finally, मैं आपसे ये भी पूछना चाहती हूँ कि ठीक है, money can buy happiness. In fact, अगर आप investment को थोड़ा discipline manner में कर लो या फिर अपनी routine में ही जमा दो, then money can definitely buy happiness in ways. But capital is also a limited resource, है ना? तो I think we've heard a lot about making sure that you're putting your money in different places, right? Yeah. The asset allocation strategy is also very important. We also have to take into account our risk return appetite, and our investment horizon is also very important. So I'd like to ask, आपने already बहुत pearls of wisdom दी है, but what are some of like your key investment mantras that you would like to give our listeners आज? So one is happiness sutra of your life should be that what I will do once I achieve financial freedom. और ये financial freedom है क्या? तो उसका एक कबीर साहब का दोहा है कि चाह मिटी चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए वह असली शहंशाह। तो अल्टीमेटली आप उस स्टेज पे पहुंच जाते हैं जब व्हेन यू आर फाइनेंशियली फ्री होते हैं, मतलब आप उस चिड़िया की तरह हैं जो पूरे आकाश में अपनी मर्जी से घूम फिर रही है, उसको कोई चिंता नहीं है। तो वो करने के लिए आपको कुछ एक गोल्स डिसाइड करते हैं आप, जो आपने बात की, रिस्क रिटर्न एपेटाइट, इन्वेस्टमेंट होराइजन इम्पोर्टेंट है, और एसेट एलोकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। और एसेट एलोकेशन कई बार लोग ये सोचते हैं कि मेरा रिटर्न मार्केट के रिटर्न से ज्यादा होना चाहिए। ऐसा कहीं जरूरी नहीं है, बिकॉज मार्केट इज 100% इक्विटी, अगर हम इक्विटी मार्केट की बात कर रहे हैं। लेकिन आप तो हो सकता है 30% डेट में हो, मतलब ऐसे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो जहां मॉडरेट रिस्क वाला हो, तो वहां पे रिटर्न आपके कम होंगे, विच इज परफेक्टली फाइन। इस वजह से रहीम साहब जो एक बात कहते हैं वो बहुत सही फिट बैठती है। वो कहते हैं का कामरी पामड़ी जाड़ गए से काज, कि चाहे वो कंबल हो या मखमल की चादर हो, ठंड जाने से बात बननी चाहिए। रहीमन भूख बुताइए कैसो मिलो अनाज, तो कि भूख मिटनी चाहिए, पेट भरना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट चीज है। तो जरूरी नहीं है कि वो इक्विटी से ही भरना चाहिए। अगर एसेट एलोकेशन करने से आपके गोल अचीव हो रहे हैं तो लेट्स बी इट, और उस पर फोकस करिए कि मेरे गोल्स किस तरह से अचीव हो रहे हैं, और उसको किसी भी मार्केट के रिटर्न से ऊपर उसको तवज्जो दीजिए, उसको इम्पोर्टेंस ज्यादा दीजिए, जो कि आपकी एसेट एलोकेशन है। तभी जब आप ये मंत्रा को फॉलो करेंगे, एसेट एलोकेशन विल हेल्प यू इन अचीव योर गोल्स एंड इवेंचुअली इट विल ब्रिंग हैप्पीनेस। तो आई विल end this conversation with a last दोहा। कबीर साहब कहते हैं कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मुझे कितने पैसे की जरूरत है कि जिसमें मेरा परिवार खुश रहे, जामे कुटुंब समाए, मेरे परिवार की सारी जरूरतें पूरी हो जाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। तो ऐसा ना हो कि सिर्फ मैं भूखा ना रहूं, मैं तो भूखा ना ही रहूं, लेकिन मैं किसी की जो हेल्प करना चाहूं, जो नीडी है, उसको भी मैं हेल्प कर पाऊं। मेरे पास इतने पैसे होने चाहिए, एंड दैट्स द मंत्रा ऑफ हैप्पीनेस, कि आप खुद भी खुश रहिए और अपने आसपास के लोगों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए। Wow. Vinayak, you have actually given us, a lesson in both happiness, in money, and in dohe, which I really appreciate. Thank you so much for joining us today. और ये बहुत ही interesting conversation था, and I think the result is also to understand कि, enough sometimes is a good place, right, for us to be, and depending on our goals, we can definitely live lives of fulfillment with the right amount of money for our goals. And we don't all have to show up in the newspaper with the label of jackpot on our head. Yeah, absolutely. That's a wrap on this edition of Moneywise, everybody. Thank you for tuning in. We'll catch you on another podcast very soon, I'm sure, with more lessons in investing and how we can, really attain what we want to through money in a smart way. Thank you. You're listening to Moneywise, brought to you by Bandhan Mutual Fund. Check out the rest of our series for more insights on investment and personal finance. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.